class. What we are learning? So tell me, what is the meaning of story sum? Our today's topic is the story sum. What do you mean by the story sums? What are you doing in the story sums? हाँ बोलो। अभी नहीं लिखना। जब आपको बोला जाए तभी लिखना है। और सबसे पहले सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, वरना उसका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। Right? What we are doing in the story sums? Already we are learn the story sum in the addition in the class 3. हमने already story sum सीख लिए है class 3 में। क्या करते थे? There is a one story is given to you. You have to be read the instructions carefully, and you have to be find out the number what will be the ask. Some numbers are given. From that you have to be find out the answer. So same process you have to follow for the subtraction also. Which word? Firstly, I want to tell you which word will be there whenever story sum is there. I am going to share a one screen to you. Wait. Remember, student, whenever you are solving story sum of subtraction, if you find the word decrease, difference, fewer, how many more, how much more, left, less than, minus, remain, take away, steal, subtract. This all word meaning is one that you have to do the subtraction. अभी हमने already addition वाला chapter सीख लिया है. We are also learning the subtraction chapter. Whenever in the exam the both question will be asked for the story sum, that time you will be confused. आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एडिशन का स्टोरी सम है या फिर सब्ट्रैक्शन का स्टोरी सम है। तो उसके लिए आपको ऐसे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको स्टोरी सम में ऐसे कोई वर्ड मिलते हैं, फॉर दैट यू हैव टू बी डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट स्टोरी सम। कितने बचे, कितने बाकी रहे, कितने कम हुए, फॉर दैट you have to be you have to do the subtraction of that story sum. Remember, student, whenever you find decrease, difference, fewer, how many more, how much more, left, less than, minus, remain, take away, steal, subtraction, word in the story sum, that time you have to do the subtraction. Now let's start the first story sum. I'm going to read it. Ankita have 3629 cards. अगर आपको नहीं दिख रहा तो ध्यान से सुनो। नहीं दिख रहा, ध्यान से सुनोगे। आपका नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है। नहीं दिखेगा वो ध्यान से सुनेगा। जैसे स्टोरी सम सॉल्व हो जाएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी के अभी शेयर कर दूंगी क्लास खत्म होने से पहले। राइट? So far, again I am going to read. Ankita have 3629 cards from. Firstly, what given? Ankita के पास 3629 cards है. From that, she share 2304 cards in her friends. क्या किया? अंकिता के पास कितने कार्ड्स थे? 3629 कार्ड्स थे। उसमें से उसने अपने फ्रेंड्स के साथ 2304 कार्ड्स को शेयर किया। नाउ व्हाट विल बी आस्क्ड, हाउ मेनी कार्ड्स लेफ्ट विथ अंकिता। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेफ्ट मीन्स कितने कार्ड्स अभी अंकिता के पास बचे। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी सम। ये स्टोरी सम है, तो आपको पहले तो सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। अगर आप सेंटेंस नहीं लिखोगे स्टोरी सम में, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। Again, I am going to read. Ankita have 3629 cards. From that, she shared 2304 cards in her friends. How many cards left with Ankita?
ये रहा आपका क्वेश्चन। अभी आपको स्टोरी सम स्टार्ट करना है, तो पहले तो आपको 3 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, जिसके नीचे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन की हुई है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आप नंबर फाइंड करते हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको सेंटेंसेस लिखने में इजी हो जाए। सो फर्स्ट, नंबर ऑफ कार्ड्स अंकिता have, that is the 3629. Second underline have it 2304. What is that? That card share with her friends. Number of cards Ankita shared, that is 2304. Now what we have to be find? Number of cards left with Ankita. Number of cards left with Ankita. यहाँ पे आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन करना है। एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। 3629 माइनस 2304। हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन मिल गया, वर्टिकली अरेंज करो, सबट्रैक्शन करो। 3629 minus 2304. Ones, tens, hundred, thousand. Now start the subtraction from the ones place. 9 minus 4, 5. 2 minus 0, 2. 6 minus 3, 3. 3 minus 2, 1. So your answer is the 1325. So you can write down, therefore, now Ankita has 1325 cards. This is your answer. Now start writing in your notebook. This is story sum. Write down the heading story sum and write down this one. I'm going to share the photo of this in the group. I share the image of this sum in a WhatsApp group. Please check and complete in the notebook. Give you the 5 minutes time. Bolo. Students, we have to write down the question also, as it's not given in your textbook. Complete fast. Okay. अगर जिसका वर्क बाकी होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फोटो भेजा है, तो वहां से कंप्लीट करेगा। Second, in a school, 8,905 students get participated in art and craft competition. क्या दिया हुआ है? स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन है, उसमें 8,905 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इन दैट इन दैट बेटा आपका नेटवर्क इश्यू होगा। इन दैट 4,780 were girls. पहले क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो। ओके, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 8,905 स्टूडेंट्स नंबर दिए हुए जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इन द फ्रॉम द 8,905, उसमें से 4,780 क्या थी? गर्ल्स। नाउ
what do you have to be find? Then find number of boys who get participated in competition. पहले क्या दिया हुआ था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8905. देवराज सिट प्रॉपर्ली. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया दैट इज द 8905. उसमें से 4780 क्या थी? गर्ल्स. नाउ you have to be find out number of boys. So what should you have to do? टोटल स्टूडेंट नंबर दिए हुए हैं, इसमें उसमें से आपको गर्ल्स के नंबर दिए हुए कि गर्ल्स इतनी थी. अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज. व्हाट शुड यू हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा अभी आपको? एडिशन से मिल जाएगा आंसर. स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी व्हाट शुड यू हैव टू डू. टोटल नंबर में से गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है 4780. तो अभी आपको फाइंड करना बॉयज नंबर. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द गर्ल. व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द टोटल, then you can find out the number of boys. So let's start the answer. Firstly, write down the three sentences. Number of students participated in competition. कितने हैं? 8905. नाउ सेकेंडली आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज द 4780. नाउ यू हैव टू बी फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉयज. फॉर दैट सब्ट्रैक्ट द बोथ नंबर्स 8905 minus 4780. Right? Now we get the horizontal subtraction. So we have to firstly arrange them vertically and start the subtraction. 8905 minus 4780. Ones, tens, hundred, thousand. Please mute yourself. Then mute yourself. Start the subtraction from the ones place. 5 minus 0, 5. 0 minus 8. We cannot subtract, so we have to take a borrow from the previous one. 8, 10. 10 minus 8, 2. 8 minus 7, 1. 8 minus 4, 4. So your answer is the 4125. So you can write down the answer. Therefore, 4125 boys get participated in competition. That's it. This is your answer. Now write down in your notebook, and I am also giving you one homework. I will be share this in a group. I request to every student, please complete this in your notebook. मैं फोटो भेज रही हूँ, प्लीज. मैं भेज रही हूँ फोटो, डोंट वरी.
भेज रहे हो। सेकंड के नीचे मैंने होमवर्क भी लिखा हुआ है। अ फैक्ट्री मेड 6,000 bags. From that it sells the 3,948 bags in a day. How many bags left with factory now? This is your homework. You have to be complete in your notebook. Now I am going to share this image in a group, so you have to complete it from that. Okay student, in the previous class I shared the video of exercise 3.3, right? उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। हम एडिशन से चेक कर देते, राइट? उसमें ए था 4,538 माइनस 1,952। बाय मिस्टेक मैंने सब्ट्रैक्शन में 4,358 ले लिया था, बाय मिस्टेक। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट अगेन। अगर आपने वैसा का वैसा लिखा हो तो उसको चेंज कर देना है। Actual question is 4,538 minus 1,952. So I am going to solve it. 4,538 minus 1,952. 1 tens 100,000। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए। नो, यू ऑलरेडी राइट इट डाउन। ये ऑलरेडी आपने लिख दिया हुआ है, लेकिन गलती से ए वाला जो था बाय मिस्टेक उसको मैंने 4,358 ले लिया था, इसलिए मैं वापस से करवा रही हूँ। ओके नाउ 8 minus 2 6, 3 minus 5 we cannot subtract, so 3 5 sorry 4 and 1 carry the borrow। 13 minus 5 8, 4 minus 9, so we have to again take a borrow। 14 minus 9 5, 3 minus 1 2। Answer is the 2,582। So we have to be check the answer with the addition of subtrahend and the difference। So I am going to add it। 1,952 plus 2,586। हाँ 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 हाँ, ये आपको नहीं लिखना ध्रुवांश। आप एक ही क्वेश्चन क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? 2 minus 6 8, 5 minus 8 13, 1 carry, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4। So answer is same, it's a 4,538। तो बाय मिस्टेक जो हुआ था उसको मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपने वैसा का वैसा लिखा हो तो उसको चेंज कर देना है आपको। अंडरस्टूड एवरीवन? मैं इसका भी फोटो अभी भेज रही हूँ आपको। ओके